अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? Let me just quickly send the link and also share it. अस्सलाम वालेकुम उमर, अस्सलाम वालेकुम असनात, अस्सलाम वालेकुम हारिस, सारा, फाखिर, रामीन, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम जीशान, how's it going? अस्सलाम वालेकुम ज़नून, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला. Zanun, why do you write Zalim with your name? Is that actually a name or is it something that you like to call yourself? Ahmed, assalamu alaikum. क्या बात है शाह, मैं कहने वाला था कि तुमने तो भाई एएस देके ही ले लिया, अब सुकून करो. लव यू जीशान, टेक केयर, हैव अ गुड स्लीप. ऑलराइट, हरमाइनी, अस्सलाम वालेकुम. Never knew Hermione could say assalamu alaikum. Hello. All right, guys. So we're beginning February, March 2023. Paper 2 today, and tomorrow we'll be doing paper 1. So let's have a look at the first question. Have a look, please. Assalamu alaikum, Arba. Challenge, let's begin. So, Assalamu alaikum, Jaza. Underline all the SI base units in the following list. This is February, March 2023, the year of your exam. Underline all the SI base. बताओ SI base units कौन से होंगे? Well done. एक होगा एम्पेयर और दूसरा होगा केल्विन. Part B. A toy car moves in a horizontal straight line. The displacement of the car is given by the equation S is equals to V squared over 2A. State the two conditions that apply to the motion of the car in order for the above equation to be valid. So you're telling us what are those two conditions for the equations of motion, especially with this one.
शाबाश, जल्दी से बताएं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। Faizi, this is yeah, I think I answered. This is February March 23, and ये अगले क्वेश्चन का जवाब दो। Do you all have access to this paper? The one that I have in front? This is February March 23. Well and Fakhir, acceleration constant होगी, ये तो पहली बात है कि अगर इसको इक्वेशन को फिर से लिखो तो v square is equals to 2as आ जाता है। रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं, ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लिनियर मोशन हम कह सकते हैं बिल्कुल होती भी है। देखो उसने लिखा हुआ है कि इट्स ऑलरेडी मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसको हम फिर से लिखेंगे नहीं। सही है, उसका मार्क नहीं मिलना। इस इक्वेशन को खास तौर पे देखो, तुम लोगों को एक चीज नजर नहीं आ रही, अब्दुल्ला ने बता दी है। हाँ, क्योंकि तुम लोगों को यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है ना, तो वो यू स्क्वायर क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि आपकी इनिशियल स्पीड इज 0। एक ये बात है, और दूसरी बात ये है दैट योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो जो बात उसने लिखी हुई है वो रिपीट नहीं करनी। शाबाश मानो। पार्ट सी देखो, पार्ट 1, पार्ट 2। An experiment is performed to determine the acceleration of the car in B. The following measurements are obtained. What is the acceleration of the car? You just have to calculate the acceleration. Hi Zuiz, Assalamualaikum Ehab. Afan, love you. Acceleration constant ho and time na given ho. Kya matlab? Are you talking about part C? Assalamualaikum Mustafa, I'm well, how are you? Calculate the acceleration of the car please. जल्दी से निकालें। वो तो एक नंबर का सवाल है, यही वाली इक्वेशन यूज करनी है, b square is equal to 2s, और जवाब निकाल देना है। So 2.75 square, get your calculators out. 2.75 square is equals to 2 into a into s. So acceleration will be what? I know Zuiz, मुश्किल क्या है? 2.75 square divided by 2 into 3.89. अल्लाह का शुक्र किया करें जब आपको चीज आसान लगती है। Acceleration is 0.97 meters per second square. Next, determine the percentage uncertainty to two significant figures in A. शाबाश, जल्दी करो। हाँ, एनकोडेड कल पिछले 2 दिन से पेपर 5 कर रहे, A2 कर रहे हैं ना, तो उसको बाकी कंपैरिजन में रखो। तो आई एक्चुअली ऑनेस्टली आई थिंक कि मुझे लगता है कि पेपर 2 जो होता है ना आसान होता है। एज अ स्टूडेंट इवन आई फेल्ट पेपर 2 इज इजी, स्पेशली मतलब रिलेटिव स्केल पे। जरूरी नहीं आसान हो, मुश्किल भी होता है, बट रिलेटिवली इट्स इजियर। डोंट हैव द पेपर, ओके। सो पेपर में तुम लोग कैसे दूं यार? ये किस तरह देते हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर पेपर? जैन को फोन करें पूछने के लिए। सो बेचारा भी सोना क्या होगा। S is equals to v square over 2a. So 2a is equals to v square over s. Acceleration is v square over 2s. और अब आप acceleration के अंदर percent uncertainty निकाल लो।
So we will get percentage A is equals to, आपको पता है ना कि जब ये v square over 2s लिखा होता है तो लिंक अटैच कर दूं, कहां पे लिंक अटैच, चैट में भेज दूं, चैट से हो जाएगा काम, if I send the link of the paper. अटैच कैसे करते हैं? Like I know what's attached, but how do you attach it? That is, how do you attach it here in a live chat? If I send the link in the live chat, would that help? Because it'll be nice. Yeah, okay. Let me just quickly send you guys the link of the paper. Just a second. Back. Yes, copy link. ठहरो यार, ये मैं पेपर का लिंक भेज रहा हूँ. अब एक काम एक करना कि अगर कोई बंदा मांगता ना पेपर तो प्लीज उसको फौरन लिंक कोई ना कोई दे दे. डिस्क्रिप्शन में पिन करते हैं डिस्क्रिप्शन. अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब आप कर रहे होते हैं ना लाइव, उस टाइम पे डिस्क्रिप्शन सामने नहीं आ रही थी. जब लाइव एंड करते हैं ना तब वो डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ चीजें आ जाती हैं. Who knows who is? क्या सबको पेपर मिल गया? So percentage A will be equal to. Now this is a question of multiplication and division. So I'm going to write percentage V and 2 percentage V because power है plus percentage S. शाबाश, जवाब बताओ. क्या बात है, जुईज देख लो. Percentage E is equals to 2 percentage V plus percentage S. So 2 percentage V is 0.8% and percentage S is 0.5%. करें जी सॉल्व. 2 times 0.8, जिसका क्या आंसर आ रहा है? %2.1. Well done, शाबाश. ओ लेवल क्लास कब होनी है? अभी तो मेरे प्लान में नहीं है ओ लेवल, क्योंकि ये ए लेवल की इतनी क्लास हो जाती हैं और फिर they have to do recordings. But if there will be, I'll definitely let you know. परसेंटेज देनी, हाँ 2.1%. डन एवरीबॉडी. वो जल्दी करो, 15 मिनट में तुम लोगों ने 2 पार्ट किए. अब पेपर आ गया ना सर के पास, जल्दी से बताओ ये how will you calculate the absolute uncertainty in the calculated value of A? What am I covering in live streams? So starting Wednesday till tomorrow, I've done paper 4, paper 5, today's paper 2, tomorrow's going to be paper 1. Assalamu alaikum Saleh. क्या आंसर आ रहा है इसका? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं? देखो ये 2.1% एरर है ए की वैल्यू में. 2.1% एरर है ए की वैल्यू में, तो असल में एरर कितना होगा? You will say the error in A will be 2.1% of the value of A. So 2.1% of 0.97. Get your calculators out, everyone. आपका आंसर आ जाएगा 0.020 और आप क्या लिखेंगे फाइनल जवाब? You will write 0.02. Well done. Meter per second square. और 0.02 लिखना है वहां 1 SF. शाबाश यार, मैंने कहा था चैट का ध्यान रखना और जो पेपर मांगे पेपर का लिंक दे देना. इश्वा ने मांगा, किसी ने नहीं दिया.
असजिद, जो एरर होता है वो हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर पे होता है. सही है. So 0.02 is 1. 0.021 will be two significant figures. Ishba, I'm sending the link of the paper. Funny, Hermione. Chale. Is it done? Let's go to question number 2. Done with the question and live 2. क्यों यार ऐसे क्या हो गया? ना उम्मीदी अलाउड नहीं है हमारे दिन में, याद रखिएगा. Question number 2, everybody. A motor uses a wire to raise a block as illustrated in figure 2.1. The base of the block takes a time of 0.49 seconds to move vertically upwards from level X to level Y. अच्छा, so ये block है जो move कर रहा है from X to Y. During this time, इस speed में move कर रहा है, और during this time, the wire has a strain of 0.0012. Nice. Young modulus भी wire given है, and it has a uniform cross section. Brilliant. So weight of the block भी given है. मैं सोच ही रहा था कि stress के बारे में कहा नहीं उसने. So हमारे पास young modulus है, हमारे पास strain है, हमारे पास weight of the block है. वो कह रहा है बताओ जी what is the cross sectional area of the wire. कैसे करेंगे इसको? सब कुछ तो आपके सामने है. How will you do this? मुझे steps में बताएं. अच्छा, जरा चैट में ऊपर जाके देखना, ये मेरा नाम से मैंने लिंक शेयर किया है हरमाइनी के कमेंट के नीचे. You will find the paper over there. Assalamu alaikum Abdul Rahman. जल्दी जल्दी. बासिम, I don't know, I don't like recent ही है, बहुत पुरानी बात नहीं है. You say that book reading is not important है, तो मैंने कहाँ से सीखा? मैंने भी तो किताबों से सीखा है. मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर if you've taken my live classes, तो उसके अंदर the content is enough because it's from multiple books, so you don't need to read the book if you have taken my live classes. But if you want to develop a deeper understanding, so please, by all means, किताब पढ़ें. शाबाश. So सबसे पहले आप stress calculate करोगे. Well done. Young modulus is stress over strain. So guys, if I want to calculate the stress, the Young modulus value is 2.2 into 10 to the power 11, and you will multiply this with your strain. Your strain is 0.0012. करो मेरे साथ ताकि पता चल जाए कैलकुलेटर में गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही मेरे. The value of Young modulus that I'm getting is 2.64 into 10 to the power 8. Is this right? Please check it. Is it 2.64 into 10 to the power 8? क्या आप लोगों का भी ये है Pascals? This is your stress. और जब इतना stress सही निकल आए तो फिर कर देना है stress is equals to force over area. और यहां से निकाल लेनी है area of cross section. So area of cross section will be force. Force is the weight of the block, which is 1.4 into 10 to the power 4 divided by the stress, which is 2.64 into 10 to the power 8. So
डिवाइड करें, so 1.4 into 10 power 4 divided by 2.64 into 10 raised to power 8. The answer to this is 5.3. Well done, Mir Jafar. 5.3 into 10 raised to power minus 5 meters square. Lovely. Yes, Abdul Rahman. Done. Is it clear, everybody? Area aa gaya? Shabash. Agla part karo. What is the increase in the gravitational potential energy of the block when it moves from X to Y? So X से Y move करते हैं और gravitational potential energy में increase निकालना है. Weight आपके पास है. Shabash. The base of the block takes a time of 0.49 seconds to move vertically. Speed भी given है. कैसे करेंगे? शाबाश बताएं. You have to calculate the increase in gravitational potential energy. Change in gravitational potential energy will be given by mgh. Now we already have the value of mg, so I'm going to write that 1.4 into 10 raised to power 4. अब ये height कैसे निकालेंगे? शाबाश सोचें. How will you find out what the height is? शाबाश बताओ. शाबाश, hurry up, hurry up, hurry up. जुजा हाइट कैसे आई? आंसर बिल्कुल ठीक आया. सो हाइट इस तरह आई, आपने यूज किया फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना? और डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. जो स्पीड है वो है 0.64 और जो टाइम है वो है 0.49. तो यहां पे लिख दिया 0.64 और यहां पे लिख दिया 0.49. मल्टीप्लाई करो दोनों को. So 1.4 into 10 power 4 times 0.64 times 0.49. The answer that we get is 4390.4. और इसको क्या लिखेंगे हम? फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? 4390.4 तो ही लिखेंगे. आंसर क्या लिखेंगे ये बताएं. Well done. शाबाश. फाइनल आंसर बताओ. You will write 4.39 या 4.4 into 10 raised to power 3. 4390.4 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. सो आपने उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को 2 to 3 पे लेके आना है. Got it? 4.4 into 10 raised to power 3 joules. 4400 is also correct. Well done. Moving on. Part C. The motor has an efficiency. The motor has an efficiency of 56%. Calculate the input power to the motor as the base of block moves from X to Y. Input power. Good question. कैसे करेंगे? Y क्या मतलब? अब्दुल रहमान क्या समझ नहीं आया इसमें बताओ. Efficiency है 56%. So N is 0.56. Efficiency होता है output power over input power. अब मुझे बताओ तुम्हारा ये ब्लॉक है, ये राइज कर रहा है. मैं इसको बनाता हूं. एक ब्लॉक है जो राइज कर रहा है इधर से इधर तक, और जब वो इधर पहुंचता है तो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होती है. और आपने ये निकाल लिया है कि वो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है. You found out what that change in gravitational potential energy is. अब बताएं कि
gravitational potential energy, is that your input or is that your output? ये बताओ. Gravitational potential energy जो है, is that your input or is that your output? ये बताएं पहले जल्दी से. एक मोटर है, एक डब्बे को ऊपर खींच रही है, डब्बा ऊपर जा रहा है, डब्बे की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आपने इंक्रीज निकाल लिया है, क्या ये इनपुट है, क्या ये आउटपुट है? ये बताएं पहले. This is output because the box has gained energy as you moved out, as you moved upwards. सही है. हाँ, exactly, Abdullah Umar. So gravitational potential energy को टाइम पे तो डिवाइड करेंगे, लेकिन ये इनपुट कैसे हो सकता है? हमने इनपुट पावर निकालनी है. खुद सोचो, मैं खड़ा हूं, मैं अपने हाथ से एक डब्बे को ऊपर खींचता हूं, ठीक है, वो डब्बा आ जाता है ऊपर. सो ये डब्बे का ऊपर आना, ये इनपुट है या आउटपुट है? क्या डब्बे ने मेरे हाथों को घुमाया? मेरे हाथों ने डब्बे को घुमाया? मेरे हाथों ने डब्बे को खींचा ऊपर. सो डब्बा इज द आउटपुट, द बॉक्स इज द आउटपुट, द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज योर आउटपुट, नॉट योर इनपुट. इन क्वेश्चन में यही तो गड़बड़ होती है. इनपुट और आउटपुट का आपको सेंस बनाना पड़ता है सोच के क्वेश्चन के बारे में. ये आउटपुट है. सो ये आउटपुट होता है जो रिजल्ट होता है. आपके मोटर से पानी खींचती है यार टैंकी में, पानी ऊपर नहीं जाता टैंकी के अंदर, कैसे जाता है? मोटर को बिजली मिलती है, मोटर पानी को ऊपर लिफ्ट करती है. सो पानी का ऊपर लिफ्ट होना टैंकी तक, इज दैट इनपुट और आउटपुट? दैट इज आउटपुट. ठीक है, सो ये आउटपुट है. सो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी आपने निकाला हुआ है, टाइम आपके पास ऑलरेडी है, उसका होता है कि 0.49 सेकेंड होता है. आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी ओवर टाइम. पावर इज एनर्जी ओवर टाइम. और ये कौन सी पावर होगी? ये आउटपुट पावर होगी. सो आउटपुट पावर इज गोइंग टू बी 4.4 into 10 raised to power 3 divided by the time. The time was given to you as 0.49 seconds. So 4.4 into 10 power 3 को 0.49 seconds पे divide कर दें. Your output power turns out to be 8960 watts. Make sense? अब efficiency है 0.56 is equals to 8960 को अपना आउटपुट लिखो divided by the input power. So input power is going to be 8960 divided by 0.5. 17,920. Guys, please check. Are you getting this answer? 17,920. So that can be written as like 8979 आ रहा है. 4.4 10 power 3. Oh, 56 मैंने 0.56 भी किया हुआ है. नहीं, सही है. Divided by 0.49 seconds था. 8979. हाँ, 8960 क्यों लिखा है मैंने? This is the output power is 8979.59, and I'll use that over here, 8979.59, and then divide this by 0.56. Oh yes, the input power that I'm getting is 16034.98. Got it? And then obviously you have to convert it to standard form, so you can write 16,000 or you can write 1.6 into 10 raised to power 4. Is this correct, everybody? Well done, शाबाश. कैसी कमाल बात है ना, सुबह के टाइम में दिमाग, आप लोगों ने देखा कि कितना प्रेशर.
And if you look outside right now, क्या खूबसूरत मौसम है, हल्के हल्के पत्ते हिल रहे हैं. इट्स लाइक वक्त आपके कंट्रोल में होता है सुबह. ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे लग रहा होता है कि पूरा दिन पड़ा हुआ है. अभी तो सारी दुनिया सोई हुई और आपने देखिए मेहनत शुरू कर दी. और अल्लाह ताला को भी ये चीज़ बड़ी पसंद है कि आप मेहनत शुरू करें right at the beginning of the day. That's how the Prophet used to do it as well. Start your day early, finish your day early, and then बरकतें ही बरकतें. Part C. The base of the block now has a uniform deceleration of 1.3 meter per second square from Y until the base of the block stops at level Z. Wow, really? तो बाहर जाना चाहिए. Calculate the tension T in the wire as the base of the block moves from Y to Z. So देखो उसने कहा कि वो Z पे जाके रुक जाता है. So final speed is going to be 0. और डिसेलेरेशन उसने दी हुई आपको. So आपका जो बॉक्स है वो Z पे जाके स्टेशनरी हो जाता है. अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यहां पे डब्बा है, यहां पे डब्बे की कोई ना कोई स्पीड है. अगर मैं इधर फोर्सेस लेबल करूं तो एक इस डब्बे का वेट है नीचे की तरफ, एक है टेंशन ऊपर की तरफ. गॉट इट? एंड इट इज डीसेलरेटिंग. मुझे बताओ, इफ इट इज डीसेलरेटिंग तो वेट ज्यादा होगा या टेंशन ज्यादा होगा? अगर डीसेलरेट कर रहा है, सोच समझ के बताना. इफ इट्स डीसेलरेटिंग, if it's slowing down, बताएं, मेरे सवाल का जवाब दें. एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फॉरवर्ड फोर्स लग रही है और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, और मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट डीसेलरेट कर रहा है. ऑब्जेक्ट डीसेलरेट्स, तो कौन सी फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स या फॉरवर्ड फोर्स? Sleep is temporary, great is eternal. That is right. वो बताओ जवानों, ऑब्जेक्ट अगर डीसेलरेट करे तो कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? वेट ज्यादा होगा. शाबाश. फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगी. फ्रिक्शन विल बी मोर देन एफ अगर डीसेलरेट कर रहा है ऊपर जाते हुए. सो इन आवर केस this is the block and tension was upward, weight was downward. और अब मैंने आपसे पूछा कि डीसेलरेट कर ऊपर जाते हुए तो कौन सी फोर्स ज्यादा होनी चाहिए? आपने कहा जी वेट शुड बी मोर बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, इट्स डीसेलरेटिंग. अगर एक्सेलरेट करो तो फिर टेंशन ज्यादा होती, फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और फ्रिक्शन इज वेट. सो आप जब लिख देते हैं F minus F is equals to ma, इसमें F हमेशा होती है बड़ी वाली फोर्स. इट्स द लार्जर फोर्स माइनस द स्मॉलर फोर्स. Larger force minus the smaller force is equals to ma. सही है. So larger force कौन सी है? Weight. Smaller force कौन सी है? Tension. Is equals to mass times acceleration 1.3 meters per second square. यहां पे लिखते हैं. Zainuddin, why you don't need to take a wild guess for that. अगर आप इसको एक और तरीके से करना चाहो, अगर आपको ये वाली बात, अगर आपको गैस करना पड़ रहा है और आपको नहीं समझ आ रही, पहली बात तो ये कि फॉरवर्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स में हमेशा फॉरवर्ड फोर्स इज द लार्जर फोर्स. सो अगर डीसेलरेट कर रहा है तो लार्जर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. अगर एक्सेलरेट करेगा तो लार्जर फोर्स उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. सो डीसेलरेट करेगा तो इसका मतलब है कि W इज द लार्जर फोर्स. अगर एक्सेलरेट करता तो टेंशन वुड हैव बीन द लार्जर. ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है तो जो चीज ऊपर खींच रही है वो ज्यादा होगी. See, so W minus T is equals to M into 1.3. And from here you can find out what the tension is. Guys, what is the weight of this block? The weight of the block is 1.4 and 10 power 4. So
वेट को लिखते हैं 1.4 into 10 to the power 4 minus t is equals to mass of the block. So mass of the block is going to be 1.4 into 10 to the power 4 divided by 9.81 into 1.3. Solve करें इसको और टेंशन निकालें. Solve. So 1.4 into 10 to the power 4 times 1.3. अब्दुल्ला मैं बताता हूँ. Divided by 9.81. 1855 आ रहा है. So इसको इस तरह लिख लो. 1.4 into 10 to the power 4 minus t is equals to 1855.24. So the tension turns out to be 12144.7. So that's like 1.2 into 10 raised to power 1, 2, 3, 4. अब्दुल्ला एक तो ये तरीका है ना जिस तरह मैंने बताया कि लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स कर लो. दूसरा तरीका भी है इसका. एक और तरीका इसका ये हो सकता है कि अब्दुल्ला आप उसी तरह लिखो F माइनस एफ इज इक्वल टू एम. आप फॉरवर्ड फोर्स ले लो टेंशन को, फ्रिक्शन फोर्स ले लो वेट को, और आप कहो कि जी ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहे हैं. सो डिसेलरेशन का मतलब होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन लेनी है. तो बात फिर से वही बन जाएगी. अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं, सो t माइनस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस एम ए. और अगर आप इसको आगे पीछे करो और मैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा w माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एम ए. माइनस माइनस कट जाएगा. you'll be left with w minus t is equals to ma, which is exactly what I wrote here. ठीक है अब्दुल्ला? सो बात वही बन जाएगी. अगर आप लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स करोगे तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि एक्सेलरेशन का साइन मैंने चेंज करना है नहीं करना, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. लेकिन अगर आप करना चाहते हो उस तरह कि जी वो ऊपर जा रहा है तो t माइनस डब्ल्यू, फिर आपको करना पड़ेगा एक्सेलरेशन को नेगेटिव. आंसर दोनों से सेम आएगा. But if you do larger force minus smaller force, then you never have to worry about it. Then you don't have to worry about the sign of the acceleration. Make sense? चलिए जी, 1.2 into 10 power 4 सबका आ गया. चलो जवानों आगे. Part B, the basal block is at levels x, y, and z at times tx, ty, and tz respectively. Make sure to give the live stream a thumbs up because it matters sometimes. The basal block is at levels x, y, and z at times tx, ty, and tz respectively. On figure 2.2, sketch a graph to show the variation with time of the distance d of the base of the block from level x. Okay, so हम लेके आते हैं इस को वापस डायग्राम को और इसकी देखते हैं कि क्या हो रहा था. So guys, from x to y you were moving at a constant speed. So मैं यहाँ पे लिखने लगा x to y constant speed थी और y to z your speed was decreasing. ऐसे था ना, क्योंकि y to z आपकी ब्रेक्स लग रही थी. x to y आप कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहे थे. सो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक ग्राफ बनाना है जिसकी वाई एक्स, अभी छोड़ दो उस नीचे वाले ग्राफ को, एक ग्राफ बनाना है विच इज डिस्टेंस टाइम. यहां पे टी एक्स लिखा हुआ है, यहां पे प्रॉब्लम टी वाई लिखा हुआ है. मुझे ये बताओ कि टी एक्स पे यू आर एट एक्स, सो एक्स से वाई तक क्या बनाओगे, स्ट्रेट लाइन या कर्व? हाँ, रीज आई कैन एक्सप्लेन दिस अगेन, नॉट अ प्रॉब्लम. अभी कर देता हूं इसके बाद. ठीक है, मुझे अपना क्वेश्चन तुमने फिर पूछना है फिर से. x से y तक कांस्टेंट स्पीड है जवानों. व्हाट डू यू थिंक विच शुड वी मेक, स्ट्रेट लाइन और अ कर्व? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. शाबाश, बताएं.
डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, क्या बनाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन या कर्व? फ्रॉम tx to ty, कांस्टेंट स्पीड, ये लफ्ज पढ़ो, कांस्टेंट स्पीड। स्ट्रेट लाइन, वेल डन, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है, ग्रेडियंट देता है स्पीड, और हम कह रहे हैं स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। सो टी एक्स से टी वाई तक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वेल डन। सो टी वाई पे जाके मैं एक डॉटेड लाइन बना रहा हूं कि यहां तक स्ट्रेट लाइन बनानी है, वैल्यू से रिक्वायर्ड नहीं है। और उसके बाद क्या होगा, जब वो ऑब्जेक्ट डीसेलरेट करेगा, जब उसकी स्पीड कम होनी शुरू होगी, तो फिर क्या होगा? हाउ डू यू शो डिक्रीजिंग स्पीड in a distance time graph? How do you show decreasing speed in a distance time graph? Shabash. So decreasing speed को आप दिखाएंगे with a curve, क्योंकि decreasing speed का मतलब होता है gradient decrease करना चाहिए। Gradient decrease का मतलब it should be a curve like this. Got it? और उसने कहा था z पे जाके उसकी स्पीड 0 हो जाती है, so at tz the curve should be flat. डिक्रीजिंग कर्व, और टीजी पे उसको फ्लैटन आउट करना है क्योंकि टीजी पे जी पे उसकी स्पीड 0 है। गॉट इट? सो अब अगर मैं इस ग्राफ पे आऊं, सो टी एक्स से टी वाई तक जवानों तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन बनाई, न्यूमेरिकल वैल्यूज वर नॉट रिक्वायर्ड, सो लीव इट वेयरएवर यू वांट इट टू बी। स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट खत्म करके उसी के अंदर कर्व को ऐड करना है। Is this clear, everyone? Yes? So far, so good? अब मुझे बताओ क्या समझ नहीं आई थी अरीज? Which part were you talking about? क्या क्लियर हो गया? चलें जी, lovely. Let's go ahead and let's move on to the next part. Next question ही खत्म हो गया। Question number 3, बहुत आला मोमेंट से सवाल आ गया। So uniform beam AB is attached by a hinge to a wall at end A. As shown, the beam has a length of 0.5 meters and weight is W. A block of weight 12 Newton rests on the beam. अच्छा, so एक ब्लॉक है 12 न्यूटन का जो पड़ा हुआ है on the beam and it's resting. The beam is held horizontal and is in equilibrium by a string attached between end B and a fixed point C. So ये string जो है ये इस beam को संभाल के रख रही है। State the two conditions for an object to be in equilibrium. The two conditions for an object to be in equilibrium are: number one, there should be no resultant force. Well done, Fakhir. No resultant force. Yeah, resultant force should be 0, and there should be no resultant torque. Torque should also be 0. सही है, ये जल्दी से लिख लें। अरीज, कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन। बच्चे ये देखो, ये तुम्हारा डब्बा है और ये डब्बा ऊपर जा रहा है, इसको टेंशन ऊपर खींच रही है, इसको वेट नीचे खींच रहा है। उसने आपको कहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका डीसेलरेट कर रहा है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आपको पता है कि डीसेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है? डीसेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो आपने अप्लाई करना है F माइनस एफ इज इक्वल टू ma। आपने कहना है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो टेंशन पहले लिखो क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वेट बाद में लिखो, m लिखो, और एक्सेलरेशन को नेगेटिव डालना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें डीसेलरेशन गिवन है और वो डीसेलरेशन थी 1.3।
सो आप लिखेंगे यहाँ पे -1.3 क्योंकि एक्सेलरेशन के अंदर आपने नेगेटिव वैल्यू डालने की और डिसेलेरेशन की वजह. आई होप इट मेक्स सेंस नाउ. Alright, now coming to part B, show that the vertical component of the tension of the string is 13 newtons. So that's easy. 17 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट यूं बनेगा और एक कंपोनेंट यूं बनेगा. जवानों मैं तुम लोगों को एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम कंपोनेंट्स तो बना लेते हैं, हमें पता है कि इट्स गोइंग राइट एंड अप, सो ये राइट जाएगा और ये अप चला जाएगा, लेकिन ये कंपोनेंट जब हवा में बना रहे होते हो ये एक्चुअली इधर नहीं होता, ये एक्चुअली इधर ही होता है जहां पे रस्सी ने ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, उसी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और उसी पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट होता है. ये नहीं होता कि वो हवा यहाँ पे कौन सी कुछ, यहाँ पे तो कोई भी चीज नहीं है, बनाने के लिए सही है लेकिन पता होना चाहिए कि ये वर्टिकल कंपोनेंट किस पॉइंट पे. सो द वर्टिकल कंपोनेंट इज एक्चुअली at point B. It's over there. And it's going to be 17 sine 50. Well done, Abdullah. So 17 sine 50 karo. Your answer will be 13 newtons. By taking moments about end A, calculate the weight W of the beam. So हमने weight W of the beam निकालना है. अब weight W of the beam कैसे निकालेंगे? आपको पता है equilibrium में है. So equilibrium का मतलब क्या है? Resultant torque should be 0. So clockwise moments must be equal to anti-clockwise moments. We know that this force is 13 newtons. So हमेशा याद रखो कि पिवट गिवन हो तो फोर्स हमेशा पिवट की तरफ रोटेट कराती है. फॉर एग्जांपल ये W न्यूटन फोर्स नीचे है तो ये पिवट की तरफ रोटेट कराएगी. पिवट ये है, ये 12 न्यूटन फोर्स नीचे है, ये पिवट की तरफ रोटेट कराएगा. ये 13 न्यूटन फोर्स ऊपर है, ये पिवट की तरफ रोटेट कराएगी. सो आपको समझ आ गई कि ये W जो है दिस इज गोइंग टू गिव यू अ मोमेंट व्हिच इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. W का जो मोमेंट है जवानों बताओ क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? शाबाश. Will the moment of W be clockwise or anti-clockwise? It is going to be clock बना लो. 12, 3, 6. It's like this. So it's clockwise. So W का distance कैसे निकालोगे? How far is W from end A? How far is W from end A? ये आपको जवाब मिलेगा इस लफ्ज के अंदर. और W जो है वो weight of the beam. How far is W from end A? So 0.35 plus 0.15. Your total length is 0.5 meters. So 0.5 को अगर मैं 2 पे डिवाइड कर दूं तो बन जाएगा 0.25. So W जो है it is at a distance of 0.25 meters. Got it? सबको समझ आ गई कि यूनिफॉर्म बीम है तो W will be bang in the middle. So क्लॉकवाइज मोमेंट्स में आपने एक लिख दिया W into 0.25 प्लस अब ये जो 12 न्यूटन है ये भी तो क्लॉकवाइज दे रहा है. So 12 न्यूटन का डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट is 0.35. So plus 12 into 0.35 is equals to ये जो 13 न्यूटन है ये आपको इस तरफ लेके जा रहे हैं, like going from 3 to 12. So this is going to be anti-clockwise. और 13 न्यूटन फोर्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट that is 0.5. So is equals to 13 into 0.5. शाबाश. सॉल्व करें इसको. Solve this and get the answer. So 13 into 0.5, that is 6.5, is equals to 12 into 0.35, that's 4.2, plus 0.25 W. Ramin, क्या जवाब आ रहा है? 0.25 W is equals to 6.5 minus 4.2, that's 2.3. इसको 0.25 पे डिवाइड कर दो. Your answer should be 9.2 newtons. Well done.
Got it? Now, calculate the magnitude of the vertical component of the force exerted on the beam by the hinge. Magnitude of the vertical component of the force exerted on the beam. So, गौर से देखना जवानों, अभी तुम लोगों ने जो वेट निकाला है वो निकाला है 9.2 न्यूटन्स. गौर से सुनना, जब भी ये सवाल आए ना कि एक अननोन सी फोर्स कोई कहीं से आ गई क्वेश्चन के अंदर, इसका एक ही तरीका है, कोई देयर इज नो थर्ड वे टू डू द क्वेश्चन. मुझे ये बताओ कि ये 9.2 न्यूटन है, ये 12 है, इन दोनों को ऐड करो. ये याद रखना, ये जब भी ये पार्ट कहेगा तो इसी तरह करना है. एक अननोन सी फोर्स है इस पिवट के ऊपर, बताओ वो फोर्स कितनी है. सो आपने क्या करना है, आपने टोटल डाउनवर्ड फोर्स निकाल लेनी है, कितनी है 9.2 प्लस 12 करो जरा, इट्स गोइंग टू बी 21.2 न्यूटन्स. अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने पहली कंडीशन लिखी है कि देयर शुड बी नो रिजल्टेंट फोर्स, लिखी है ना पहली कंडीशन कि देयर शुड बी नो रिजल्टेंट फोर्स. ओ भाई कैसे रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, ऊपर की तरफ 13 है, नीचे की तरफ 21 है, इसको तो गिर जाना चाहिए. ये क्यों नहीं गिर रहा बताएं? व्हाई इज इट नॉट फॉलिंग? नीचे 21 न्यूटन खींच रहे हैं, आपकी आंखों को नजर आ रहा है कि ऊपर 13 न्यूटन कम है, इसको तो गिर जाना चाहिए. क्यों नहीं गिर रहा? व्हाई इज इट नॉट फॉलिंग? क्यों बताएं? क्योंकि शाबाश, क्योंकि एक फोर्स होगी पिवट के ऊपर की तरफ. वेल डन. क्योंकि एक फोर्स होगी पिवट के ऊपर हमेशा ऊपर की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ द वीकर फोर्स होगी. और वो कितनी होगी वो भी आप बता सकते हैं. आप 21.2 में से 13 को माइनस कर दें, जो डिफरेंस है वो यहां पे हो. वेल डन. सो इसको x कह लो. सो 13 प्लस x is equals to 21.2. So x is going to be 21.2 minus 13. And when you will solve, you'll get 8.2 newtons. Make sense, everybody? So far, so good? और वो भी आप पुट होगी. Part E. The block is now moved closer to end A of the beam. अच्छा, so block को आप इधर लेके आते हो. ठीक हो गया? जब ब्लॉक को जब इधर लेके आएंगे, assume that the beam remains horizontal. State whether this change will increase, decrease, or will it have no effect on the horizontal component of the force exerted on the beam by the hinge. So समझने की कोशिश करो बात को जवानों, कि अभी आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में क्यों है? आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में इसलिए है क्योंकि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और एक और फोर्स भी है, ये जो राइट की तरफ फोर्स है, एक ये है. तो मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट आपका राइट की तरफ क्यों नहीं जा रहा? ये ऑब्जेक्ट आपका राइट की तरफ क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि क्या एक लेफ्ट की तरफ फोर्स होगी जो इसको बैलेंस करेगी? यस और नो? ऑब्जेक्ट राइट की तरफ क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि डेफिनेटली देयर इज अ फोर्स which is balancing it in the opposite direction. Make sense? क्या ये बात सबको समझ आती है? अब वो ये कहता है कि ब्लॉक को आप मूव करें टूवर्ड्स एंड ए, और हम कह रहे हैं assume that the beam remains horizontal, वो इक्विलिब्रियम में ही रहता है. State whether this change will decrease or have no effect on the horizontal component of the force exerted on the beam by the hinge. अब मुझे बताओ कि जब तुम इस डब्बे को इधर मूव करोगे तो क्या तुम्हें उतनी ही फोर्स चाहिए इस साइड पे, या हम कम कर सकते हैं?
ये वाली फोर्स नहीं चेंज हो रही. दिस फोर्स इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट चेंजिंग. ये कांस्टेंट है. अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप डब्बे को इस तरफ मूव करोगे, दो दो फोर्सेस आ गई हैं एक ही डायरेक्शन में जो दूसरे को सपोर्ट करिए, तो क्या अभी भी आपको उतनी ही वैल्यू की जरूरत है जितनी पहले थी, या अब हम कम कर सकते हैं उसको? बताएं. ये जो फोर्स ऑन द हिंज है, क्या ये उतनी ही वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा जब आप डब्बे को भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? सोच के बताएं. शाबाश. डिक्रीज कर सकते हैं, कर सकते हैं, एग्जैक्टली कम कर सकते हैं, क्योंकि this force on the right, this is the right force that has to be equal to the total left force. अब लेफ्ट फोर्स आपके पास दो आ गई हैं, पहले एक थी. सो जब दो आ गई हैं तो वो जो ये वाली लेफ्ट फोर्स है इसको आप कम कर सकते हैं, क्योंकि वो साथ वाली फोर्स उसको हेल्प करेगी. सो द आंसर टू दिस इज whether the chain will increase, decrease or have no effect. The answer is decrease. कम हो जाएगी. Does this make sense, everybody? Exactly, Hermione. Is it clear now, guys? Are you all with me on this? Yes. Challenge, perfect. So, guys, that is the end of today's live stream. I hope कि interesting काम हो गया. Almost आधा paper भी हो गया. Inshallah, tomorrow we will be doing paper 1. So stick around tomorrow morning at 5, inshallah. Best of luck, everybody. Thank you for joining in. Make sure to like, subscribe, and hit the bell icon. Can I explain part D again? Part D. Part D. हाँ. Part D में ये है, ये 13 न्यूटन ऊपर है, ठीक है, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स तुम्हारी आई है 21.2 वेट और इसको ऐड करके. तो ये इक्विलिब्रियम में कैसे होगा अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं है? तो डेफिनेटली फोर्सेस बैलेंस तो होंगी. तो वो बैलेंस कैसे होंगी कि आपके पिवट के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ. गॉट इट? अस्सलाम वालेकुम माहा, हाउ इज इट गोइंग? Maha is one of my old students. Maha, are you from LGS? If I'm not wrong. I'm so happy to hear that the notes are helping you still. So the Passivik की full recording इस weekend पे available होगी. जो ऐप पे ऊपर पढ़ रहे हैं, yes, बिल्कुल. वो उनकी जो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं वो सारी की सारी आ जाएगी इंशाल्लाह. अब मैं बस वही रिकॉर्डिंग शुरू करने लगा हूँ. Guys, now that you're up, don't sleep. अब सुबह हो गई है, उठ गए हो, बाहर रोशनी है, बाहर रोशनी देखो, क्या सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी तुम लोगों की. अंधेरे में पढ़ना शुरू किया, रोशनी होगी. ये जो फीलिंग होती है ना, इस फीलिंग को समझने, इसको सिंक इन करने दें अपने अंदर. सोए मत अभी. अभी आपको नींद नहीं आनी, और अभी जो नींद आएगी वो ऐसी अजीब सी नींद होगी कि वो उठेंगे भी तो यू वोंट बी फ्रेश. अभी अपने आप को पढ़ने दो. अभी आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है. लेट yourself study, get tired around 12 o'clock, take a nap. कैलूला कहते हैं उसको. Of course, Fakhir, you never slept. You should have slept. You should have slept. रात सोने के लिए बनी है, रात को सोया करें. Maha, get in touch on Insta. All right, everybody. Thank you so much for joining in. Best of luck. Maha, तुम्हारी तो रात होगी, हमारा दिन चढ़ रहा है अभी. Take care, everybody. Thank you. Khuda Hafiz.